The next one, the need to overhaul a semiconductor scheme, DLI, PLI, design linked incentive is for the semiconductor. India has a program of $10 billion, that is that time 75,000 crore for the semiconductor program in India to curb the import from particularly from China and increase the self-reliance for the strategic and emerging sector, artificial intelligence, machine learning, critical infrastructure, defense, space, and precision technology, etc. To build a supply chain resilience by integrating into the semiconductor global value chain. उसमें there has been a promotion of the scheme with by allowing other country by other MNCs, for example TMSC, Taiwan's largest semiconductor industry in the world. Primary aim of the DLI scheme, design link incentive, is to cultivate semiconductor design capability in India. डिजाइन को प्रमोट करने की बात हो रहा है rather than की मेकिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर. That is to be involve the local talent for the creation of the indigenous company over the time. हाँ, तो एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एरिया पर ये बात हो रहा है कि इंडिया में तो सेमीकंडक्टर वेफर तो बढ़ेगा ही मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन क्या जो डिजाइनिंग पार्ट है वो वेस्टर्न डोमिनेट रहेगा या फिर चाइना, जापान, ताइवान डोमिनेट रहेगा? इंडिया का भी खुद डिजाइनिंग होना चाहिए. सेमीकंडक्टर वेफर तो बना सकते हैं, वो चीपर है, वो अफोर्डेबल है लॉन्ग टर्म में, लेकिन डिजाइन लिंक इंसेंटिव का मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म में इंडिया डिजाइन होना चाहिए. इंडिया डिजाइन प्रोडक्ट शुड बी रादर देन कि इंडिया में बन रहा है. इंडियन चिप डिजाइन कर्नाटका गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है. कर्नाटका गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर फेबलेस एक्सेलरेटर लैब विच पार्टनरशिप with the Indian Electronic Semiconductor Association EDA vendor could be a blueprint for the DLI. तो इसको लिख ले एक बार प्रवेश की. कर्नाटका गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर फैबलेस एक्सेलेरेटर लैब ए मॉडल कैन बी प्रमोशन फॉर DLI इन ऑल ओवर द स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में. सेमीकंडक्टर मशीन कुड एम टू इमुलेट SFL अप्रोच, मतलब यही वाला अप्रोच फॉर द प्रोवाइडिंग द स्टार्टअप एक्सेस टू द नेटवर्क ऑफ मेंटर इंडस्ट्री फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि सब एक जगह है, कोऑपरेटिव एक्टिविटी से काम करे और डिजाइन लिंक इंसेंटिव को प्रमोट करे. डिजाइन चिप डिजाइनिंग और वेफर डिजाइन वेफर मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही रहा है, इंपोर्ट कम करने के लिए. ठीक. junta rule, Myanmar plums a new depth. Myanmar says a joint last rank with Syria, North Korea in the Civil Liberty Index. Plaster crop 100 years ago, 1923. उस समय का डेटा. Analyzing the rising gap in income under the PLFS survey, the change in income quality among all the income earner in India. तो उन्होंने सर्वे किया था. अब गिनी कोएफिशिएंट सबके अलग अलग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर वेज वर्कर, कैजुअल वेज वर्कर. गिनी कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड मेजर ऑफ इनइक्वालिटी है, 0 to 1 होता है उनका. परफेक्ट इक्वालिटी 0 और इनइक्वालिटी 1. तो इसमें परफेक्ट बोलो. इसमें ये मतलब है कि जैसे जो जो गिनी कोफिशिएंट होता है, गिनी इंडेक्स होता है, ये जो कम्युनिटी में एक किसी कंट्री वगैरह में पॉवर्टी यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो होती है उसको मेजर करने के लिए होता है. अगर ये जीरो है तो इसका मतलब कि सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है.
और अगर ये 1 है तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक इंसान के पास सारी जो वेल्थ है पूरी कंट्री की वो है, और बाकियों के पास कुछ भी नहीं है जितनी भी पॉपुलेशन है। तो हाँ, जीरो तो टू वन होता है ये। तो वन वुड रिफ्लेक्ट कंट्रीज मैक्सिमम का, इनइक्वालिटी। हाँ, तो कंट्रीज का लगभग 0.33 इसके आसपास होता है। हम्म। तो इसी में बात हुआ कि 0.4 ओवरऑल है, तो बहुत धीरे कम होता है। ऐसे 0.42 था पहले, अभी 4.1 हुआ है, 0.4। 17-18 में 6.66 था, तो अभी 6.94, एक तरह से 90-30। जितना ज्यादा 1 के पास जाएगा ना, इसका उतनी ज़्यादा मतलब उतनी इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। इसमें एक बात है कि एज extensively documented rise in women labor force participation has primarily come from the through the low paid part-time self-employment work. Household may be earning more, women may be working, but this increase in low paid self-employment work has led to an increasing gap between the top and bottom of the self-employed income. तो women से related बात हो रहा है कि मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वहां से इनका रूल आता है, रेगुलर वॉइस वर्कर से नहीं होकर के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा आता है। प्राइमरी स्कूल वॉक टुवर्ड्स द स्टडी सेंटर एंड तिरकरपाड़ा विलेज, अंगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन, द नीड टू फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, रोल ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ मोहल्ला सोसाइटी एंड स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए। जॉइंट फैमिली में रोल ऑफ जॉइंट फैमिली, रोल ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ सोसाइटी एंड देन स्कूल। देयर इज अ जेंडर गैप because of the girls facing the social norm and deeply ingrained gender stereotype correlated with the biological factor as adolescents. ASCR report, Pratham NGO, with regarding to the STEM education, the boy take up more the STEM courses than more than girls. To learning outcome reveals the gender equity or gender gap widens with a progressive level of education owing to the greater barrier. हाँ, धीरे धीरे जैसे बड़े होते आती है गर्ल चाइल्ड, there is a social barrier, biological also, तो उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड द सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाता है। जैसे हम लोग 2 हफ्ते पहले पढ़े थे कि मोस्टली द गर्ल्स वे टॉकिंग अबाउट कि दे वांट टू बिकम इंजीनियर, डॉक्टर्स, एस्ट्रोनॉट, लेकिन जैसे वो 10th स्टैंडर्ड के पास होती है उसके बाद फिर वो ह्यूमैनिटीज, साइंस, मेडिकल में चले, तो एक जेंडर स्टीरियोटाइप है विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। तो गर्ल्स फेसेस ड्यू टू सोशल नॉर्म्स डीपली इंग्रेन्ड जेंडर स्टीरियोटाइप कोरिलेटेड विद बायोलॉजिकल फैक्टर। Most important roots of gender discrimination are emerge at earliest stage of education. तभी जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात होता है, आईसीडीएस का बात हो रहा है, आंगनवाड़ी में प्रमोट किया जा रहा है फ्री लैपटॉप। जैसे कल ही एथिक्स केस स्टडी में फ्री लैपटॉप एजुकेशन में प्रमोट करने से आप बढ़ावा दे सकते हो गर्ल चाइल्ड को, फ्री लैपटॉप, फ्री टैबलेट एक्सेट्रा, वो भी एक टारगेटेड बेनिफिशियरी, फ्रीबीज नहीं है। और हायर एजुकेशन में भी देखा गया था कि जो बैकवर्ड सेक्शन है उनके लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनकी फीस बिल्कुल ही नल कर दी गई थी, और जो प्राइवेट है उनकी भी 40 या 50% कम करने की बात की गई थी, इंक्रीज यस, करने की। लेकिन ओवरऑल बोला जाए तो जो भी पॉलिसी चाहिए इट हैज टू शिफ्ट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। Seeds of the gender norms are ingrained where child develop understanding of identity, behavior and stereotype at a very young age, 7, 8, 9 years उसमें biases over the long run और impede the individual from realizing the full potential biases के कारण। क्यों ऐसा होता है? लैक ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यूजीसी या काउंसिल आ जाएगा इसमें, एआईसीटीसी का आएगा, एनसीईआरटी का, आरटीई इसमें इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रोल प्ले करेंगे।
poor quality, no legislation for universal access to early childhood education continue to serve as a bottleneck in India. Beti Bachao, Beti Padhao, ideal campaign to kickstart campaign, National Education Policy 2020. We talked about the 3 language and also the use of mother language for scientific education at a young age. दूसरा, इकोनॉमिक पाइप बढ़ेगा. देर इज इंक्रीज लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी. सीसीटीवी रहेगा, कैमरा लगेगा, टेक्नोलॉजी यूज होगा. ऑब्वियस बात है फिर वहां से जेंडर स्टूडेंट टूटेगा. reduce poverty, infant mortality, crime, improved economic education, girl education plays out a virtuous cycle. Over the time, girls in India are today more educated than they have ever been. लेकिन बात हो रहा है कि पहले से कंपेयर करने कोई ज्यादा फायदा नहीं. वी हैव टू कंपेयर विद द डेवलप्ड कंट्रीज जहां पर देयर इज एन equity in participation, representation of women in every section of society, every section of power structure, right from bureaucracy, judiciary, army, corporate. होमी जे बाबा इंपॉर्टेंट, ये साइंस एंड टेक पर्सनालिटीज में डाल देना करूंगा. विथ रिगार्डिंग 1966 he died and there is alleged that CIA was behind it. तो alleged है. इंपॉर्टेंट का रोल कहां पर है? विथ रिगार्डिंग टू द भाभा एटॉमिक रिसर्च and nuclear program in India, because Pandit Nehru wanted India to be a nuclear power back in 1950s. Even when he talked about NAM principle, he stated clearly that India should aspire for the nuclear weapon. And that time, Homi Jahangir Baba was touring all over the world with regarding to the specific technology required for the enrichment of uranium. तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है. और ही टॉक्ट अबाउट द थर्ड स्टेज रिएक्टर इंडिया में. प्रेशर हेवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर. थर्ड स्टेज में थोरियम बेस्ड रिएक्टर. इंडिया में थोरियम ज्यादा है इसलिए. ओवरसी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई और नॉर्मल सिटीजन में क्या फर्क है? तो इन 3 में फर्क है बस. ओसीआई सिटीजन नहीं है, लेकिन उनके पास राइट्स नहीं है कि उनको ओसीआई मिलना ही चाहिए कार्ड. इट इज ए मैटर ऑफ प्रिविलेज. पहला ये. दूसरा, इट कैन बी कैंसिल्ड. सिटीजनशिप इंडिया कैंसिल करना एक लॉन्ग प्रोसेस. एग्जीक्यूटिव बॉडी का रोल इसमें कम रहता है, आपको जुडिशरी थ्रू जाना पड़ेगा. सेकेंड, ओसीआई कैन नॉट बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. प्रोफेसर नहीं बन सकते, और ना ही कि दे कैन होल्ड द एग्रीकल्चर लैंड. ओसीआई बाकी सब सेम है. इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कॉर्पोरेट में काम करने का, आप खरीद सकते हो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर, सब चीज सेम है. ओसीआई एंड सिटीजन इंडिया. प्रवेश, इफ तो इसमें अगर देखा जाए कि द नोटिस हैव बीन सर्व्ड बाय द फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस टू हिम. क्यों? क्योंकि सी हैव कवर्ड नक्सल हिट रीजन. डिड द नेगेटिव स्टोरी ऑन एट्रोसिटी अगेंस्ट द क्रिश्चियन ऐसा बोला था. वीजा वायलेशन इंक्लूड लद्दाख नेपाल रीजन फ्रॉम इंडिया. फॉरेन जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड to undertake such trip without special permit. Ladakh territorial control should be in Gilgit-Baltistan. तो लद्दाख एंड कारगिल. लद्दाख में 2 हो गए, कारगिल एंड लेह. Lake Apex body and Kargil Democratic Alliance have asked the center to extend the Ladakh territorial control up to the Gilgit-Pakistan in the POK, Pakistan occupied Kashmir. We call it POK. Pakistan call it Gilgit-Baltistan and Azad Kashmir. फिर लद्दाख को बोलते हैं कि it should come under the 6th schedule to fight against the threat of China, and also they can get autonomy in decision making with respect to the local custom culture.
It has also demanded full-fledged legislature, just like Jammu and Kashmir, so that the local will get effective governance and development and foster the federal structure of India. It can be helpful. Further, Ladakh is ecologically fragile and sensitive area. That is why it is asking for sixth schedule and full-fledged legislature, political outfit in Ladakh. January 22nd is now part of a widened Republic Day celebration, says our Prime Minister Narendra Modi. तो January 22 और ऑपरेशन पराक्रम दिवस 23, ऑपरेशन पराक्रम is related to, kindly search for it. चंद्र बोस जी, ऑपरेशन बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस। नहीं, ऑपरेशन पराक्रम डिफरेंट है। पराक्रम दिवस अलग है, ऑपरेशन पराक्रम पराक्रम, अलग है। हाँ ठीक है, ऑपरेशन पराक्रम डिफरेंट 2012 में हुआ था। We talked about this one कि on the eve of the birth centenary, Karpoori Thakur named for Bharat Ratna. He was a twice chief minister of Bihar, 1970-71 and 77-79. Mungerila Committee, Lyle Kal Commission submitted reports on the recommending the backward class into two, extremely backward class and backward classes. It was implemented in 1978 और 26% रिजर्वेशन आया था बिहार में, EBC and OBC. तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड बिटवीन द चिल्ड्रन एज 5 to 18 दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन वेरियस फील्ड, सोशल, फिर ब्रेवरी, उसके बाद फिर सोसाइटी में जिनका क्या रोल रहा है ओवरऑल. ईच अवार्ड इज गिवन अ मेडल एंड अ सर्टिफिकेट. थ्री कव्स बॉर्न टू नामिबिया चीता. इट इज अ गुड इंडिकेशन कि अभी तक जो भी चीता आया था उसमें मोस्टली 7 of them have died. तो to increase the population, आशा has given birth to 3 cubs. Kuno's Park, Kuno National Park, मध्य प्रदेश. SII, Serum Institute of India, सर्वावैक इससे पढ़े थे, इन्होंने बनाया था. Serum Institute of India प्राइवेट बॉडी है. It will join the CEPI network of vaccine producer in the global south for rapid, agile, equitable response for the future public health disease outbreak. CEPI पूछ सकता है, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, कोलिशन फॉर द एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, ग्लोबल पार्टनरशिप है फॉर एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन एंड काउंटरिंग मेजर अगेंस्ट द एपिडेमिक एंड पैंडेमिक थ्रेट. ग्लोबल साउथ को वैक्सीन जरूरत है, वैक्सीन मैत्री लिया गया था इंडिया की तरफ से फॉर प्रमोशन ऑफ द वैक्सीन इन द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड. ग्लोबल साउथ ब्रॉडली कंसिडर लैटिन अमेरिका, कैरेबियंस, एशिया एक्सक्लूडिंग इजराइल, जापान एंड साउथ कोरिया. ओशियाना, इसमें न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का टॉल. तो लासा फीवर, निपा एंड डिजीज एक्स अदर पैटर्न. तो CEPY कोलिशन टेस्टिंग किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट सप्रेसिंग द डिजीज ट्रांसमिशन. CEP के थ्रू जब हम लोग बात करते हैं विद रिगार्डिंग टू एपिडेमिक कंट्रोल, तो हम ऐसा WHO के एग्जांपल देते हैं. तो ग्लोबल वैक्सीनेशन पार्टनरशिप अलायंस, तो GVPAI एक और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी लेना चाहिए. और CEPI, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, ये 4-5 नाम लिख सकते हैं मेंस में. 22 वैभव फेलोज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिसर्च सिनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस. वैभव स्कीम मतलब क्या है? इट इज मेंट टू अट्रैक्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट बेस्ड अब्रॉड फॉर शॉर्ट टर्म कोलैबोरेशन. मतलब आप वापस इंडिया में आए और कंट्रीब्यूट करिए.
वेब स्कीम प्रमोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में। बेसिकली रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। 4 लाख रुपीज दिया जाएगा स्टाइपेंड अ मंथ फॉर अकोमोडेशन। उसमें आपको बोला जाएगा कि स्टार्टअप में काम करिए, 3 साल के लिए होस्ट इंस्टीट्यूशन का काम करिए, लॉन्ग टर्म रिसर्च कनेक्शन विद इंस्टीट्यूशन, ब्रिंग न्यू आइडियाज इन द फील्ड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। उसका जो सिमिलैरिटी विद अदर स्कीम है, विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैसिलिटी वज्रा स्कीम इनिशिएटेड इन 2018। ओवरऑल प्रवासी भारतीय एनआरई के लिए क्या किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, और इंडिया कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड और बाहर जो जा चुके हैं कैसे इसको प्रमोट करें, उनके लोग उनके जो एक्सपर्टीज है कैसे प्रमोट करें। तो एक वैभव स्कीम हो गया, दूसरा वज्र स्कीम डाल दो इसको। ऑस्कर्स फिल्म टू सेट टू इन इंडिया नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट टू किल अ टाइगर। इट इज स्मॉल टाउन स्मॉल विलेज बेस्ड डॉक्यूमेंट्री जिसमें रंजीत ही बैटल लगे टू फाइट इनजस्टिस अगेंस्ट हिज डॉटर। किर्गिस्तान एससीओ में तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बस ये याद रखना। बाकी सब किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान सभी रहेंगे एससीओ में मेंबर। ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना। वेनेजुला प्रेसिडेंट मदुरो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट प्रीबीस, इसी कारण इकोनॉमिक क्राइसिस है। रिच इन ऑयल वेनेजुला, लेकिन तब भी गरीबी स्पेसिफिक। येमेन हुदीस के अगेंस्ट में जॉइंट लॉन्च बाय द यूएस एंड ब्रिटेन, जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक। Houthi attack is a growing crisis in Western Asia linked Israel and Houthi war, Israel and Hamas war. Oppenheimer, Manhattan Project से related है, and poor thing. Martin Scorsese directed Killer of the Flowers. फिर टू किल अ टाइगर बात कर लिए। Government capital expenditure growth to slow down to just 12% to 24-25. India is committed to reduce its fiscal deficit to 4.5% by 2025. FRBM के तहत इंडिया लॉन्ग टर्म टारगेट रहता है, उसको अचीव करना है। फिजिकल डेफिसिट एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं हो, इसलिए कंसोलिडेशन फिजिकल कंसोलिडेशन गोल। जोकोविच फाइट हीट। हाउ फिजिसिस्ट आर मेकिंग सेंस ऑफ द मिस्ट्री ऑफ द पल्सर ग्लिचेस। पल्सर्स यूपीएससी में पूछा था 2023 में। Pulsar is to be intimately tied to the discovered 1932 James Chadwick that had discovered a neutron. When neutrons are in group, they are not allowed to have a same energy. Each neutron have a settle for lowest available energy level. When heavy star die, their core implode. If they are heavy enough, they become black hole. True. Para statement. But if they not, they collapse just enough to form a ball of neutron. मतलब हेवी स्टार सबसे अगर बड़ा होगा वो ब्लैक होल बन जाता है, सेकंड वाला जो छोटा रहेगा it forms neutron with gravity not being strong enough to overwhelm their outward pressure. This compact super dense object is called neutron star. छोटे वाले न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, बड़े वाले ब्लैक होल।
फिर पल्सर क्या है? तो पल्सर इट इज हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार दैट emit beam of electromagnetic radiation. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है. फ्रॉम अर्थ इट लुक्स लाइक अ स्टार दैट हैज अ पल्स, हार्ट बीट जैसे. द रैपिड बीट picked up only by the radio telescope. फ्लिकरिंग होता है, लाइट फ्लिकरिंग होता है, वैसे ही पल्सर स्टार फ्लिकर करते हैं. एंड उसके अलावा एक और क्राइटेरिया होता है पता लगाने का, जैसे ये इमेज ऊपर दी हुई है तो जो बीम ऑफ एनर्जी जा रही है ऊपर और नीचे, अगर ये डायरेक्टली हमारी अर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है तो उसको पल्सर बोलते हैं, एंड अगर हमारी तरफ पॉइंट नहीं कर रही है तो क्वासर बोलते हैं। हम्म. हमारी तरफ पॉइंट कर रहे तो पल्सर बोलते हैं. हाँ जी। न्यूट्रॉन स्टार है 20 किलोमीटर वाइड स्फीयर विद सॉलिड क्रस्ट. न्यूट्रॉन स्टार मतलब जो स्टार हेवी स्टार छोटे हो गए, कंडेंस हो गए, न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, वो क्या है? द सॉलिड क्रस्ट एंड कोर. द क्रस्ट इज बिल्ड बिलीव टू बी लैटिस ऑफ आयरन लाइक न्यूक्ली इंटरस्पेड बाय न्यूट्रॉन सुपर फ्लूइड. उसके ऊपर सुपर फ्लूइड होगा. कोर प्रिडोमिनेटली कंटेन्स सुपर फ्लूइड एंड नो सॉलिड पार्ट. हम्म. और वही डिफरेंस, क्रस्ट ऊपर में, सुपर फ्लूइड उसके नीचे है, दोनों जो डिफरेंस है, इट लीड्स टू फोर्सेस ऑफ वॉर्टेक्स और इवेंचुअली बिकम्स द स्पिनिंग. उसी का रोटेशन होता है और फिर एक तरह से बीट फॉर्मेशन होता है. हम बैक वेल, गर्लेस स्ट्रेट इन अंटार्कटिक. एवियन नेविगेशन, extra sensory capability to assist them in this task. Direct them with the help of the Earth's magnetic field. ये पूछा था एक बार वो पहले पीटी में कि they can direct their capability, they can direct their, they have the capacity to align themselves with the Earth's magnetic field. ऐसा हो सकता है bird. True. The bird have the ability to detect the changes in atmospheric pressure, weather, Earth magnetic field. Based on that, they locate specific region and find the home. तभी migratory species का हर साल एक तरह से माइग्रेशन होता है स्पेसिफिक एरिया के थ्रू ही. The compass works in a relation to the Earth magnetic field or current generated here turn into the flight path. फील्ड कैसे अफेक्ट करता है? तो लिखा हुआ था कि 1888 में 3,000 pigeon have set out for the return journey from northern France, लेकिन could not reach their destination because of the explosion on the surface of the earth. solar flare हुआ, उसके कारण it impacted the production of radiation and impacted the earth's magnetic field. इसके कारण इनका flight path lose हो गया. The internal magnetic compass picked up confusing signal and the birds lost their way. Once you can take up Indian Express. The prosperity of farmers. So PM Kisan Samriddhi Kendras are there. One-stop shops are there where farmers are getting access to modern facilities and information. So it is closer to their doorsteps, to their home. And the number is 1,25,000 Kendras have been developed as one-stop shops. And talked about Jan Nayak. Karpoori Thakur, who gets the Bharat Ratna, the highest civilian award in India, and his contributions we talk about. So he's known for the layered reservation, which is the keyword, layered reservation, because he talked about giving reservation to extremely backward caste, to OBCs, to women, and economically backward classes. So that is why it is called layered reservation. And Jan Nayak means he is popularly known as people's leader. And so his contributions, social contributions, helped in creating more just and equitable society, and they would be acting as a guiding light at the same time.
So Mandal legacy and Karpoori legacy, these are keywords that we use. And so Mandal Commission report implemented in 1990, which was again about OBC reservation. So ISRO's Republic Day tableau, it would be celebrating the gender equality. So latest missions we talk about the Chandrayaan-3 mission, we're talking about the Aditya L1 mission, which is for to study the sun. Third would be the Gaganyaan, the upcoming mission. So here in all these missions, we saw the critical role and the important role of women. So that is being celebrated and reflecting gender equality. This we've talked about here, we can just talk about the keywords that right of the fetus, the unborn child, versus the woman's right to bodily autonomy, and the MTP Act 1971. So woman gets over ₹1 crore relief for the delay in getting the flat. When talking about real estate sector, so the role of RERA, which is the regulatory authority, real estate regulatory authority, that is important. So here we see that it was promised as a part of the agreement that after 3 years you'll be getting the flat, but that was not, and there was a default. So for that, the National Consumer Disputes Redressal Commission, NCDRC, they have awarded the owner ₹1 crores. So this is, we can say, one of the major issues in the real estate sector in India. The diversion of funds are seen away from that particular project which is being developed. So here when we're talking about the homeless, so firstly the data, their collection, their data, the numbers, that is important. And as a case study, when we understand this particular case study, so it is showing that the people who are not having the Aadhaar cards, they were not allowed entry into the shelter homes. So they've been sleeping on the roads, and women, children, there are no facilities, basic services are not available to them. So ID proof is not mandatory for the admission now. This has been updated by the civic body. So it is important that you inspect their mannerisms, and if they look harmless, so they are allowed in. So as we mentioned, that collection of the data is important. Secondly, when we have the proper data and the numbers, and they are residing in a proper habitation, the night shelters, we can work upon improving their skills, so that again we can rationalize the revenue expenditure over here. So apart from the layered reservation, he played an important role in terms of waiving off the school fee for the girls until their post-graduation, or provided 50% quota to women in panchayats. And he promoted Hindi language in government offices and declared Urdu as the second official language. So we can talk about promotion of regional languages, strengthening of the Panchayati Raj systems. So celebrating 127th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. So when talk about his contributions, so he was a leader of the INA, Indian National Army, and is a revolutionary. And here it is also mentioned the naval revolt of 1946, the naval mutiny, and the Air Force strike. So these are direct consequences of the Subhash Chandra Bose's influence. So although this article is little, we can say, political in tone, so we'll just picking up the objective information. So army deploys more troops.
So when we talk about the challenges to internal security, militancy in Jammu and Kashmir is one of the challenges. So here we are seeing of late multiple attacks on the personals, army personals. So we are seeing heightened surveillance with the help of technology and drones. And we're using the Israeli Heron Mk2 and other smaller UAVs, unmanned aerial vehicles, to strengthen the surveillance in that region. And second step is strengthening the Rashtriya Rifles battalions. So it is the counter-terrorism force which is deployed in Jammu and Kashmir. Third is road opening parties. So they have important role for safe passage of the military vehicles. So better protection against the ambushes, they can play more important role, and focusing upon more coordination between the authorities. And fourth would be strengthening the already existing intelligence network, both human intelligence and technical intelligence. And different operations are being carried out by the Indian Army, Operation Sarva Shakti and Operation Sarpa Vinash, to flush out the militants. So these four major, can say, steps which are being taken in order to counter militancy in Jammu and Kashmir. So talk about relationship between India and Maldives. So yesterday we covered this, that Chinese research vessel is being docked at the port of Maldives. But however, it is being said that it will not be carrying out any research in the Maldivian waters. It is just for the port call and replenishment that the vessel has been docked at Maldivian port. And we talked about the debate that when talking about the ethical dilemma, or simply talking about dilemma, so we talked about opportunism versus nationalism, that between Maldives and Lakshadweep as the alternatives promoting tourism. So this is the keyword, opportunism versus nationalism. And here we saw that the president of Maldives, Mohammed Muzi, he said he touted India for bullying. He said ki you bullying Maldives, but at the same time, what is China doing? China will also bully Maldives, the rising closeness, using its debt diplomacy. So that is also called bullying only. Worldly wise, there's something about success that dehumanizes you, whereas failure reminds you of who you really are. So this will be like success. Honestly, when we say the person is not grounded and some unethical traits they start getting visible, whereas your failure hai, jo aapki mistakes hai, that reminds you who you actually are. It keeps you humble and grounded. So this we can say. And यहाँ पे हम हाईलाइट कर सकते हैं कि जो परस्यूट ऑफ रिकॉग्निशन होता है उसकी वजह से आप जो जेन्युइन एडिशन होता है वो नहीं कर पाते सोसाइटी को। हाँ, और एज एन एग्जाम्पल अगर बात करें तो यहाँ पे मालदीवियन प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. सो आफ्टर द सक्सेस, एक तरीके से हाउ द geopolitical situation in the Indian Ocean has been changing, that we can say some role after the success, how it is believed that he is more pro-China and he's calling for कि जो Indian military personnel हैं they should be sent back to India. So that we can say. इसमें और कोई एंड इट एग्जाम्पल लीड्स टू एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस, या फिर एक की टर्म हम यूज कर सकते हैं मॉरल करप्शन. यस ठीक है.